মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আটাই মৰম ল'বা। আজি তোমালোকৰ বাবে নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এই ভিডিঅ'টোত মই শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ পঞ্চমমান শ্ৰেণী অৰ্থাৎ ক্লাছ 5ৰ হিন্দী পাঠ্যপুথিৰ 7 নম্বৰ পাঠ শ্ৰীৰাম এই পাঠটো প্ৰস্তুত কৰি আনিছোঁ। প্ৰথমতে আমি পাঠটো পঢ়িম আৰু তাৰপিছত তাৰ তলত দিয়া প্ৰশ্নোত্তৰবিলাক কৰিম আৰু ব্যাকৰণৰ যি কাম দিয়া আছে সেইখিনিও আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া আটাইয়ে কিতাপ উলিয়াই লোৱা আৰু মোৰ সমানে সমানে তোমালোকে শুনি যোৱা আৰু তাৰপিছত এই ভিডিঅ'টোৰ সহায়ত তোমালোকে পাঠটো পঢ়িব আৰু অন্যান্য প্ৰশ্নখিনিও কৰিব পাৰিবা। এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ তেনেহ'লে। बात बहुत पुरानी है। अयोध्या के राजा दशरथ थे। उनकी 3 रानियाँ थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। श्री रामचंद्र कौशल्या के पुत्र थे। भरत मझली रानी कैकेयी के पुत्र थे। छोटी रानी सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न पैदा हुए थे। चारों भाइयों में बहुत प्रेम था। वे बड़ों का आदर करते थे। मिथिला के राजा जनक ने अपनी बेटी सीता के विवाह के लिए स्वयंवर रचाया। अपने गुरु विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण स्वयंवर में गए। वहाँ पर राम ने शिव का धनुष तोड़ दिया। उनका विवाह सीता के साथ हुआ। राजा दशरथ बूढ़े हो चले थे। वे राम को राजा बनाना चाहते थे। रानी कैकेयी को यह अच्छा नहीं लगा। वे अपने पुत्र भरत को राजा बनाना चाहती थी। कैकेयी ने महाराजा दशरथ से कहा कि वे राम को 14 वर्ष के लिए वन भेज दे और भरत को अयोध्या के राजा बना दे। दशरथ ने कैकेयी को कभी वचन दिया था कि वे कोई 2 वरदान मांग ले। अतएव दशरथ विवश थे। राम को 14 वर्ष के लिए वन जाना पड़ा। भरत राम को खड़ाऊ को गद्दी पर रखकर राजकाज देखने लगे। वे स्वयं राजा नहीं बनना चाहते थे। राम के वियोग में दशरथ की मृत्यु हो गई। राम के साथ उनकी पत्नी सीता और लक्ष्मण भी थे। लंका का राजा रावण बड़ा अत्याचारी था। उसने एक दिन साधु का वेश बनाया। सीता को अकेली देखकर उन्हें उठा ले गया। हनुमान ने सीता का पता लगाया। राम ने लंका पर चढ़ाई कर दी। भयंकर युद्ध हुआ। रावण अपने परिवार के साथ मारा गया। राम की विजय हुई। उन्होंने सीता को छुड़ाया। लंका का राज्य विभीषण को मिला। विभीषण रावण का भाई था। वह राम भक्त था। 14 वर्ष पूरे हुए। राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। भरत ने उन्हें राज्य सौंप दिया। चारों ओर आनंद छा गया। राम के राज्य में सभी स्वस्थ और सुखी थे। এতিয়া পাঠটো আমি অসমীয়া ভাষাত অকণমান আলোচনা কৰোঁ। প্ৰথম পেৰেগ্ৰাফটোত কৈছে যে বহুত পুৰণা কথা। অযোধ্যাত দশৰথ ৰজা আছিল। তেওঁৰ 3গৰাকী পত্নী, 3গৰাকী ৰাণী আছিল, কৌশल्या, कैकेयी আৰু সুমিত্ৰা। ৰামচন্দ্ৰ কৌশल्याৰ পুতেক আছিল। মাজু ৰাণী কৈকেয়ীৰ পুত্ৰ আছিল ভৰত। সৰু ৰাণী সুমিত্ৰাৰ 2জন পুত্ৰ লক্ষ্মণ আৰু শত্ৰুঘ্ন। এই 4জন ল'ৰাৰ মাজত অতি মৰম আছিল আৰু তেওঁলোকে ডাঙৰ কিজনক ইজনে সিজনক
বহুত সন্মান কৰিছিল। পিছৰ পেৰেগ্ৰাফটো চোৱা। মিথিলাৰ ৰজা জনকে নিজৰ জীয়েক সীতাৰ স্বয়ম্বৰ পাতিছিল। সেই স্বয়ম্বৰলৈ গুৰু বিশ্বামিত্ৰৰ লগত ৰাম আৰু লক্ষ্মণ গৈছিল। তাত ৰামে শিৱৰ ধনু ভাঙি সীতাৰ লগত বিবাহ হৈছিল। ৰজা দশৰথ বুঢ়া হৈ গৈছিল। তেওঁ ৰামক ৰজা বনাব খুজিছিল। ৰাণী কৈকেয়ীৰ কিন্তু এই কথাটো ভাল লগা নাছিল। তেওঁ নিজৰ পুত্ৰ ভৰতক ৰজা পাতিবলৈ বিচাৰিছিল। কৈকেয়ীয়ে মহাৰাজা দশৰথক ক'লে কি তেওঁ ৰামক 14 বছৰ বনবাসলৈ পঠিয়াই দি ভৰতক অযোধ্যাৰ ৰজা পাতিব লাগে। দশৰথে কৈকেয়ীক বহুত আগতেই কথা দি থৈছিল যে যেতিয়া বিচাৰে তেওঁ 2টা বৰ ৰজাৰ পৰা ল'ব পাৰিব। আৰু সেইবাবে দশৰথ বিবুদ্ধি হ'ল। ৰামক 14 বছৰৰ কাৰণে বনলৈ পঠিয়াই ভৰতক ৰজা পাতিবলগীয়া হ'ল। আৰু এইবাৰ ভৰতে ৰামৰ খৰমজোৰ সিংহাসনত ৰাখি ৰাজ্যভাৰ চলাবলৈ ধৰিলে। তেওঁ ৰজা হ'ব বিচৰা নাছিল। আৰু ৰাম গুচি যোৱাৰ পিছত দশৰথে মনত বৰ দুখ পালে। ৰামে নিজৰ পত্নী সীতা আৰু লক্ষ্মণক লগত লৈ গৈছিল। এই দুখতে ৰজা দশৰথৰ মৃত্যু হৈছিল। তাৰপিছত লংকাত সেই সময়ত ৰজা ৰাৱণে ৰাজত্ব কৰিছিল আৰু তেওঁ বৰ অত্যাচাৰী আছিল। এদিন তেওঁ সাধুৰ বেশ ধৰি সীতাক অকলে থকা অৱস্থাত আহি হৰণ কৰি লৈ গৈছিল। হনুমানে সীতানো ক'ত আছে তাৰ সন্ধান চলালে। ৰামে হনুমানৰ পৰা যেতিয়া সন্ধান পালে লংকাত আছে বুলি, তেতিয়া লংকা আক্ৰমণ কৰিলে। আৰু ৰাম ৰাৱণৰ মাজত বৰ ডাঙৰ যুদ্ধ হ'ল। ৰাৱণে পৰিবাৰ সহিত মৰা গ'ল। ৰাৱণৰ গোটেই পৰিয়ালটোৱেই মৰা গ'ল। ৰাৱণটো মৰিলেই, পৰিয়ালটো মৰা গ'ল। আৰু ৰামৰ বিজয় হ'ল। ৰাম জিকিলে। আৰু তেওঁ সীতাক লৈ উভতি আহিবলৈ সক্ষম হ'ল। লংকাত ৰাৱণৰ ভায়েক বিভীষণক ৰজা পাতিলে। আৰু বিভীষণ বৰ ৰাম ভক্ত আছিল। 14 বছৰ যেতিয়া পূৰা হ'ল তেতিয়া ৰাম, সীতা আৰু লক্ষ্মণ অযোধ্যালৈ উভতি আহিল। ভৰতে ৰাজ্যখন ৰামক তেতিয়া চলাবলৈ দি দিলে। গোটেই চাৰিওফালে আনন্দত জোৱাৰ উঠিল। ৰামৰ ৰাজ্যত অৰ্থাৎ ৰামৰ ৰাজত্বকালত সকলো স্বাস্থ্যৱান আছিল আৰু সকলো প্ৰজা সুখী আছিল। এতিয়া ইয়াত শব্দাৰ্থ কেইটামান দিছে। মজলি মানে তিনিজনীৰ মাজৰ জনী। মজলি মানে মাজু, আমাৰ অসমীয়াত মাজু বুলি কয়। আদৰ মানে সন্মান। স্বয়ম্বৰ মানে বৰ চুন্নেকি এক প্ৰথা। আগৰ দিনত যিটো প্ৰথাৰে বিবাহ সম্পন্ন হৈছিল এইটো স্বয়ম্বৰ বুলি কয়। স্বয়ম্বৰত মানে ৰজা মহাৰজাবিলাক বহি থাকে আৰু তাৰ মাজৰে যাক পচন্দ লাগে কইনাজনীয়ে মালা পিন্ধাই নিজৰ পতি হিচাপে বৰণ কৰিব পাৰে। আজ্ঞা মানে আদেশ। वन মানে জংগল। বেশ বনায়া মানে ৰূপ ধাৰণ কিয়া। বেশ বনোৱা মানে কাৰোবাৰ ৰূপ লোৱা। অত্যাচাৰী অন্যায়ী। বিবশ লাচাৰ মানে বিবুদ্ধি। বিজয় জিত। ভয়ংকৰ ভয়ানক বহুত জোৰ খা। এতিয়া প্ৰশ্ন উত্তৰৰ ফালে আহা। আমি প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি চাওঁ।
पाठ श्री राम कक्षा 5। दशरथ कौन थे? दशरथ अयोध्या के राजा थे। राम का माता का नाम क्या था? राমৰ माকৰ नाम কি আছিল? राम का माता का नाम था कौशल्या। তাৰপিছত राम के कितने भाई थे? राমৰ केইজন भातृ আছিল? राम के 3 भाई थे, अर्थात रामक লৈ 4 জন। राम का विवाह कैसे हुआ? राমৰ বিয়া কেনেকৈ হৈছিল? राम और भाई लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ मिथिला के राजा जनक की बेटी सीता के स्वयंवर में गया। মানে राम और তেওঁৰ ভায়েক লক্ষ্মণ विश्वामित्ৰৰ লগত मिथिला राज्यर रजा जनকৰ জীয়েক सीतार বিয়ালৈ सीतार स्वयंवरলৈ গৈছিল। वहाँ राम ने शिव का धनुष तोड़ दिया और उनका विवाह सीता के साथ हुआ। তাত स्वयंवरত रामे শিৱৰ ধনুখন ভাঙিছিল আৰু তাৰ ফলত সীতাৰ লগত বিবাহ হৈছিল। আকৌ কৈছোঁ, ৰামে শিৱৰ ধনুখন ভাঙিছিল আৰু তাৰ ফলত সীতাৰ লগত তেওঁৰ বিয়া হৈছিল। दशरथ राम को राजा क्यों बनाना चाहते थे? दशरथे रामक क्यों रजा पातिब खुजिছিল? उत्तर होब, दशरथ बूढ़े वो छले थे, इसलिए वे राम को राजा बनाना चाहते थे। दशरथ बुढ़ा हो গৈছিল, সেই কাৰণে তেওঁ रामक रजा बनाब খুজিছিল। तार पिछरটো চোৱা, राम को वन में क्यों जाना पड़ा? रामक किय कारण राम वनলৈ যাব লগা হৈছিল? बहुत पहले राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी को पसंद दिया था कि वे कोई भी वरदान जब चाहे मांग सकेगी। बहुत आगते रजा दशरथे पत्नी कैकेयीक এটা কথা কৈছিল যে যেতিয়া তেওঁ বিচাৰে, কৈকেয়ীয়ে যেতিয়াই বিচাৰে তেতিয়াই বৰদান ল'ব পাৰিব। कैकेयी अपने पुत्र भरत को राजा बनाना चाहती थी। कैकेयीয়ে নিজৰ पुत्र भरतक रजा बनाবলৈ বিচাৰিছিল। मौका देखकर उसने राजा दशरथ को राम को 14 वर्ष के वनवास को भेजने को कहा और भरत को अयोध्या को राजा बनवाया। আৰু সেই সুবিধা চাই কৈকেয়ীয়ে ৰজা দশৰথক কৈ ৰামক 14 বছৰ বনবাসলৈ পঠিয়াইছিল আৰু নিজৰ ল'ৰা ভৰতক ৰজা পাতিছিল। रावण ने साधु का वेश बनाकर क्या किया? रावणे साधुर वेश লৈ কি কৰিছিল? साधु का वेश बनाकर रावण ने राम की पत्नी सीता को उठा ले गया। साधुर वेश লৈ रावणे राমৰ पत्नी सीताक हरण কৰি লৈ গৈছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, राम ने सीता को किस प्रकार चुराया? रामे सीताक केनेকৈ उद्धार কৰিছিল? उत्तर होब, राम ने हनुमान की मदद से सीता का पता लगाया। रामे हनुमाনৰ সহায়ত सीता ক'ত আছে गम पाले। फिर वे लंका पर आक्रमण किया और लंकात आक्रमण करिले। राजा राम और रावण के बीच लड़ाई में रावण मर गया। राम और रावणर युद्धत रावण मरि থাকিল। इसके बाद राम ने सीता को लंका से वापस ले आया और यार पिছত रामे सीताक लंकार পৰা उद्धार কৰি ঘূৰাই আনিলে। এতিয়া তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, राम लक्ष्मण और सीता अयोध्या कब लौटे?
राम लक्ष्मण और सीता अयोध्याলৈ केতিয়া उभतिছিল? उत्तर 14 बरस पूरे होने के बाद 14 বছৰ पूरा होৱাৰ পিছত राम लक्ष्मण और सीता अयोध्या वापस आए। राम लक्ष्मण और सीता अयोध्याলৈ घूरी आइছে। राम के राज्य में सभी लोग कैसे थे? राমৰ राज्यত সকলো লোক কেনেকুৱা আছিল? राम के राज्य में सभी लोग स्वस्थ और खुश थे। राমৰ राज्যত সকলো লোক স্বাস্থ্যৱান আছিল আৰু সুখী আছিল। এতিয়া ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চাব লাগিব। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল राम के बारे में 5 বাক্য লিখো। राমৰ বিষয়ে 5টা বাক্য লিখিব দিছে। राम अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र थे। राम अयोध्या राजा दशरथर पुत्र आसिल। वे बहुत अच्छे स्वभाव के थे। बहुत ভাল स्वभाव आसिल। उन्होंने मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता से विवाह किया था। मिथिलार रजा जनकर जीएक सीतार लगत विवाह करिছিল। विवाह पाशत आबद्ध হৈছিল। राम ने अपने पिता दशरथ की बात मानकर 14 वर्ष वन में बिताए। रामे निजर देउताक निजर पितृ दशरथर कथा मानी 14 बছৰ বনত কটাইছিল। वे एक निपुण वीर योद्धा थे। एजन निपुण वीर योद्धा आसिल। এতিয়া ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা। তোমালোকৰ কিতাপত দিছে 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো। चुआ दिया से नीचे लिखे शब्द को वाक्य में प्रयोग करो। तलत दिया शब्दबिलक वाक्यत प्रयोग कर दिছে। प्रथम शब्द तो स्वयंवर। प्राचीन काल में स्वयंवर प्रथा प्रचलित था। पुराने दिन प्राचीन काल स्वयंवर प्रथा प्रचलित आसिल। विवाह विवाह माने बिया। अगले महीने मेरा भाई का विवाह है। अहा माहत मोर दादार बिया। अत्याचारी अत्याचारी लोगों को भगवान क्षमा नहीं करते। अत्याचारी मानुहक भगवाने क्षमा नकरे। वंश राम रघुवंश के राजा थे। राम रघुवंशर रजा आसिल। यार पिछर प्रश्न व्याकरण सम्बन्धी तुम्हारे चुआ। किताबते तुम्हारे पेन्सिल दी लिखि लब पारा। कैकेयी के पुत्र का नाम यात हब भरत। कैकेयी के पुत्र के नाम भरत। इते तुम्हारे साइडते लिखि দিব पारा भरत। भरत थे खाली जगहडोखर लिखिब লাগিব। उत्तर तो मैं इतना स्पष्टके लिखि दी। लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा से पैदा हुए थे। सुमित्रा माकर नाम कि आसिल? सुमित्रा। सुमित्रा शब्द तो खाली जगह लिखिब লাগিব। चारों भाइयों में बहुत प्रेम था। तो इते लिखिब जुड़ब प्रेम था मरम। तार पिছত मिथिला सीता मिथिला के राजा जनक 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 की पुत्री थी। तार पिছত राम ने शिव का धनुष तोड़ा। तार पिछते राजा दशरथ बूढ़े हो चले थे। रावण बड़ा अत्याचारी था। अत्याचारी ये इतना नजुड़ब मैं काषते लिखि दीसो। चुआ अत्याचारी। तार पिछते शेषरটো चुआ। राम ने लंका पर लंका पर छाया कर दी। हो गल। तार पिछरটো चुआ। ठीक उत्तर पर सही निशान लगाओ। कैकेयी किसे राजा बनाना चाहती थी? राम को भरत को। कैकेयी काक राजा पातिब खुजिल? भरत को। दशरथ की मझली रानी कौन थी? कैकेयी सुमित्रा। दशरथर মাজু रानी कौन आसिल? कैकेयी। सीता का पता किसने लगाया? सीतार खोज सन्धान कोने पाइसिल? हनुमान। युद्ध में विजय किसकी हुई? राम।
लंका का राज्य किसको मिला विभीषण को हो गल তাৰপিছত नीचे के शब्दों को एक से अनेक का बोध कराने वाले शब्दों में बदलो তাৰমানে একবচন বহুবচন যেটো অসমীয়াত আমি একবচন আৰু বহুবচন বুলি কওঁ এই একবচন বহুবচন কৰিব লাগে একবচন বহুবচন কৰিব লাগে এতিয়া একবচন পুত্ৰ পুত্ৰৰ একবচন কি একবচন পুত্ৰ পুত্ৰ মানে বেটা হয় না নহয় পুত্ৰৰ একবচন পুত্ৰ হ'লে বহুবচন কি হ'ব পুত্ৰ কি হ'ব পুত্ৰ তাৰপিছত বানানটো চাবা দেই ৰাজা ৰাজা ৰাজাৰ ৰাজায়ে হ'ব ৰাণীৰ ৰাণীয়ে হ'ব সাধু সাধুৱে হ'ব ৰাজ্য ৰাজ্য অকি মাত্ৰা দি পেলাই অংকি বিন্ধি হ'ব তাৰপিছত পুৰুষ জাতি তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো আছে पुरुष जाति के शब्द को स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द में बदलो अर्थात तुम्हाक दिया আছে पुलिंगत और तुम কৰিব লাগে स्त्रीलिंग তোমালোকক पुरुष जाति और स्त्री जाति বুলি কৈছে পিছলৈ তোমালোকে এইটো লিংগ বুলি পঢ়িবা পুংলিং স্ত্ৰীলিংগ এতিয়া ক্লাস 5 বহুত সৰু ক্লাস কি কাৰণে দিছে তা পুৰুষক যদি ৰাজা বুলি কয় তা মহিলা গৰাকী কি ক'ব ৰাণী बेटा स्त्रीलिंग की हम बेटी पिता माता भाई बहन এইখিনিতে এই পাঠটো শেষ হৈছে আশা কৰোঁ আটাই বুজিছা টান ইমান নাই তোমালোকে যদি এবাৰ নহয় দুবাৰ তিনিবাৰ চাবা হৈ যাব ৰাখিছোঁ ইমানতে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু কোনেনো ক'ৰ পৰা চাইছা সেইটো তোমালোকে কমেণ্টত লিখিবাচোন মোৰ জানিলে ভাল লাগিব কোনে ক'ৰ পৰা চাইছা কমেণ্টত লিখি দিবা দেই ধন্যবাদ